Hello students, so this is going to be the second lectures on potentiometer. In the first lectures, पहला वाला lecture में मैंने दिखाया how to find out the EMF of an unknown cell और second point जो था to compare between the EMF of two cells. Okay, इस particular lectures में I'll discuss how to find internal resistance of a cell with the help of potentiometer. To find internal resistance of a cell. Okay, तो यहाँ जाने से पहले let me remind you one thing. In Kirchhoff's law and all, in connections of cells, I have make you understand, or I have explained certain things. Like, for example, there is a cell having EMF E. एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मतलब ये रेजिस्टेंस अंदर वाला है, जस्ट इट हैज बीन शोन आउटसाइड. दीज आर द 2 पॉइंट्स. अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी हम कितना लिखेंगे? विल बी राइटिंग इट एज ई ओनली, राइट? और अगर यू आर कनेक्टिंग दिस सेल टू ए सर्किट बिकॉज ऑफ विच ए करंट आई विल फ्लो इन द सर्किट, current I is flowing, some connection is there, is the internal resistance, this is the EMF of the cell. Then in this situation, what is VAB? E minus IR. Okay, one more expression was E plus IR. I do not need it here. So these are the two situations. When current is flowing through a circuit, it will become EIR. For example, this is the cell. Okay, EMF E, internal resistance R. I am connecting it to an external resistance R. And how much will be the current in the circuit? Current in the circuit will become equal to I. I is nothing but EMF divided by total resistance, because small r and capital R is going to be in series, same current is going to pass through both. Okay, so यहाँ पर तुम्हारा VAB कितना होगा? VAB, okay. I can express this VIB in many ways. One expression is this one, E minus IR. Okay, VA minus E plus IR is equal to VB. So VA minus VB will become E minus IR. We know it. We can write E minus IR. We can write it like this also. Current into resistance between these 2 points. If I do not go this way, if I go this way, A is at a higher potential, B is at lower potential, because current flows from high potential to low potential. So if you go this way, current is I, resistance is R, potential drop will become how much? I R. And how much is I? I is nothing but E R divided by R plus R. Okay, this is the potential between A and B when current is passing through the EMF. Okay, इसका मतलब I am explaining the circuit once again. इसका मतलब ये सेल है, लेट मी टेक द EMF टू बी E. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R. बी केयरफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B. दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. यहाँ पर स्विच ओपन है. इफ K इज ओपन, VAB इज इक्वल टू E. करंट फ्लो ही नहीं होगा सर्किट में. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बिकम लाइक दिस सिचुएशंस. दिस इज पहला सिचुएशन. सेकंड चीज, इफ K इज क्लोज्ड, अगर क्लोज कर दोगे तो ये सिचुएशन मिलेगा तुम्हें. VAB कितना बन जाएगा? VAB हम कितना लिखेंगे? ER डिवाइडेड बाय R प्लस R, और E माइनस IR भी लिख सकते हैं. ओके, ER डिवाइडेड बाय R plus R. Ready? So with this situation, we are going to find internal resistance of a cell with the help of potentiometer, which is going to be very simple with this idea I have given just now. So let us come to the potentiometer. E naught, R naught. This is the point A. This is the point C. In between, this is the potentiometer wire. Clear? Current in the circuit is I. ये वाला I अलग है, right?
this is the circuit, current in the circuit I. Let me call this is I1. Okay, if I call this is I1, this will become I1, I2, I1, this will become I1. So you should not get confused between these symbols and these symbols, right? So इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया, ये वाला सिंबल देख लो यहाँ पर। अब इसमें से मैंने क्या किया, जो अननोन सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दो नोन सेल्स गिवन सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं, जो निकालना है हमें, ये ईएमएफ दिया हुआ है ई। क्लियर? इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर का साथ कनेक्ट किया एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जॉकी, स्लाइडिंग की, इसको कहते हैं स्लाइडिंग की। अब अक्रॉस दिस ईएमएफ हमने एक दूसरा रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया एंड देयर इज अ स्विच की। ये सिचुएशन विजुअलाइज करना। लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज ए एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज बी। ओके, सो ये सिचुएशन इज समवट सिमिलर टू द सेकेंड सिचुएशन मतलब to compare between two EMF. So we have found E1 getting balanced over L1, E1 directly proportional to A. Okay, L1, second point, E1 directly proportional to L1, E2 directly proportional to A2. So E1 by E2 is equal to L1 by L2. Something that we have discussed. Okay, something that we have discussed in this particular problem. Okay, तो compare between two EMFs. Okay, E1 के लिए हमें बैलेंस लेंथ L1 में मिला, E2 के लिए हमें बैलेंस लेंथ L2 में मिला. So E1 directly proportional to L1, E2 directly proportional to L2, E1 by E2 is equal to L1 by L2. A similar situation we are going to do here. Okay, first situations. If K is open, K is open to VAB कितना होगा? E. VAB between VAB कितना है? E. K is open. VAB is equal to E. Okay, for no reflection of the galvanometer. इसमें से कोई करंट है नहीं. ओके, तो बिटवीन ए एंड बी पोटेंशियल ड्रॉप कितना माना जाएगा? ई माना जाएगा. फिर हम इस जॉकी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि ये साइड से भी कोई करंट नहीं आएगा. अब यहाँ पर भी कोई करंट नहीं है, यहाँ से भी करंट नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल्स है वो ईएमएफ ऑफ द सेल ई है. अब ई के लिए कहाँ बैलेंस पॉइंट मिलेगा, बैलेंस में कहाँ मिलेगा? सपोज एट पॉइंट, ये पार्टिकुलर पॉइंट में हमें गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना मिल गया? 0 मिल गया. गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना मिल गया? 0 मिल गया. सपोज दैट पार्टिकुलर लेंथ इज L1. देन with key open between A and B, potential difference is E, EMF of the cell, then E will become directly proportional to L1. Similarly, if K is closed, VAB कितना हो जाएगा? VAB कितना होगा? ER divided by R plus R. जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, A और B की पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? ER डिवाइडेड बाय R प्लस R. क्योंकि ये साइड से करंट नहीं आने से भी ये लूप क्लोज है, इसमें करंट फ्लो होते रहेगा. ओके, कुछ भी करंट फ्लो हो सकता है. I1 ये लूप में करंट फ्लो होते रहेगा. तो बैटरी के बीच में से करंट जाएगा, बैटरी के बीच में से सब करंट फ्लो होगा, बैटरी के बीच में से सब करंट फ्लो होगा. पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? E माइनस IR. और कितना बन जाएगा? ER डिवाइडेड बाय R प्लस R. दैट मींस ER डिवाइडेड बाय R प्लस R हो जाएगा. ER डिवाइडेड बाय R प्लस R. ओके, सो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया, मॉडिफाई हो गया. कितना हो गया? ER डिवाइडेड बाय R प्लस R. तो उसके लिए बैलेंस लेंथ अलग होगा. सपोज वी हैव फाउंड अ बैलेंस लेंथ एट L2. मतलब जब L2 हुआ तब यहां पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हुआ, क्योंकि पहले जब 0 हुआ था E के लिए, अब E की जगह में क्या आ गया? ER डिवाइडेड बाय R प्लस R. तो पहले बैलेंस लेंथ कितना था? एट L1 गैल्वेनोमीटर रीडिंग वाज 0. अभी L1 में नहीं होगा क्योंकि ये अलग है, तो इसीलिए कहां पर हुआ? सपोज एट L2 हुआ. देन VAB इन द सेकंड सिचुएशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2. तो हम क्या बोलेंगे? L1 इज द बैलेंस लेंथ विद की ओपन एंड L2 इज द बैलेंस लेंथ विद की क्लोज्ड. बैलेंस लेंथ मतलब हमें यहां पर भूलना नहीं है. बैलेंस लेंथ का मतलब है, जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट EMF ऑफ ए सेल इन आवर फर्स्ट लेक्चर्स ऑन पोटेंशियोमीटर. ओके, सो दिस वाज द अननोन EMF जिसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था. द अननोन EMF
okay, was connected like this, and when the length, when AB was equal to L, हमें क्या मिला, galvanometer of the reading is 0. मतलब वो particular situation में, उस particular situation में potential difference between A and B was equal and opposite to the unknown EMF, was equal and opposite to the unknown EMF. जिस particular length के लिए galvanometer का reading 0 होगा, उस particular length को हम balance length कहेंगे, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन में बैलेंस ने कितना मिल गया, L2 मिल गया। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कितना होगा, E डिवाइडेड बाय ER बाय R प्लस R, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, फिर कितना आएगा, L1 बाय L2, E कैंसल्स आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई R L2 R L2 R L1, सो R कितना बन जाएगा, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, L1 माइनस L2 इंटू R, इस L2 नीचे आ जाएगा, L2, इसका मतलब अननोन रेजिस्टेंस इज L1 द बैलेंस लेंथ विद की ओपन, L2 द बैलेंस लेंथ विद की क्लोज्ड, माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ द सेल, दिस वाज R। ये अलग है, ये वाला R नॉट इज डिफरेंट, दिस R नॉट इज डिफरेंट। अब यहाँ पर जो आएगा द सेल का साथ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने, उसका साथ जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल R है, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। Okay, so in my lectures I'll be solving numericals on potentiometer, so see you then.